अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट हैं महर तारर, जिन्होंने मीडिया और अखबार से रिलेटेड बहुत काम किया हुआ है। शी इज होस्टेड मल्टीपल टॉक शोज एज वेल। सो महर, हाउ आर यू? Hi, thank you for having me on your podcast. No problem. Okay, so Meher, I would like to know, how have you used your platform to advocate for feminism? Look, first let's go to the topic of your discussion here. Right. Go two-edged sword wala jo. Yeah. I was when I was thinking about the topic, that when you use the word sword, even though this word means that it has both positive and negative connotations, I think a sword ke saath to negative connotation. दोनों ही negative है. The thing to primarily to understand is that feminism is the term feminism is misunderstood in Pakistan. Right. When you say the word feminism, they think of women in 1960s, for instance, जिसको second wave feminism कहते हैं, 1960s to 1980s, जिसके there was Gloria Steinem, जिसका was one of the most prominent figures of that movement. So people think that it's about women hating men and burning their undergarments and I feel like that's the basic understanding people have. that उनको ये लगता है. And interestingly, people would be surprised कि ये basically movements थी. पहले ये movement शुरू हुई 1800 something में, I think 1872, I'm not sure about the 18 something, जब अमेरिका में औरतों ने suffrage के लिए for women to have the right to vote, उन्होंने ये movement शुरू की. Feminism word was coined by a French person, जिसका मतलब उस तरह वो उसका मतलब जो feminine qualities होती हैं, so it's not used in that sense. तो उस वक्त उन्होंने जो वोट के लिए शुरू किया, and I think in 19 I'm sorry, I'm very bad with dates, I think 1930s में अमेरिका में औरतों को वोट देने का हक हासिल हुआ था. उससे पहले like 1700 something में a woman in UK, she wrote a book about के औरतों को तालीम हासिल करने का हक होना चाहिए. So basically ये एक मूवमेंट थी वोट के लिए. उसके बाद 1960s to 1980s से इसको सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म कहते हैं, जिसमें फंडामेंटली उसके साथ वर्ड था लिबरेशन. नाउ पीपल हियर द वर्ड लिबरेशन तो दे थिंक, और वो सिर्फ मतलब ये था टू बी इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, सोशल और इकोनॉमिक और हर सेंस में औरतों और मर्दों के पास अब तो हर जेंडर की बात करते हैं. पाकिस्तान में पाकिस्तान तुम दो जेंडर्स की बात करते हैं. दे शुड हैव equal opportunities. तो interestingly, Pakistani writer who's a feminist, कुछ क्योंकि अपने bios में वो feminist लिखते हैं, तो I said to her that I don't think I'm a feminist. I said I do not have any labels for myself, liberal or feminist. So she said कि अच्छा, do you believe in equality? Do you believe in this? Do you believe in that? Like positive. I said, yes, I do believe in all these things. I've believed in all these things all my life. She said, okay, then you're a feminist. So पाकिस्तान में it is very important to understand कि जब कोई फेमिनिज्म की कोई बात कर रहा है, उसका सिर्फ ये मतलब है कि you and your class, your brother should have an equal opportunity to go to school and to have higher education. To have higher education. If you are getting married, you have the right to decide whether you want to be married or not to be married. कि आपकी इजाजत के बगैर आपकी शादी ना की जाए. उसके बाद जब आप वर्क प्लेस में हो तो आपकी कोई अपॉर्चुनिटी आपसे इसलिए ना ले ली जाए क्योंकि आप औरत हो, आप फीमेल हो. आपको आज के दिन तक हॉलीवुड में इक्वल सैलरीज का ये चल रहा है कि बंदे को मिलती है पे पैरिटी. वहां पे कितनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में शुरू हुआ है. आई डोंट थिंक इट विल हैपन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो उसको बॉक्स ऑफिस के साथ कनेक्ट करते हैं. दे से इट्स गॉट नथिंग टू डू विद योर जेंडर. इसके आप बॉक्स ऑफिस पे क्या कर सकते हो, लेकिन आई थिंक किसी भी फील्ड में यहाँ पे भी आई स्टिल बिलीव के मेन आर पेड मोर. सो एज आई सेड, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी में दैट्स व्हाट आई हैव प्रैक्टिस के अगर हमारे घर में एक मेल बच्चा है और एक फीमेल बच्चा है तो उन दोनों की बिल्कुल एक जैसी जिंदगी हो, उनको एक ही तरह से देखा जाए. और
एज इफ आई कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट, तो मैंने उसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से प्रैक्टिस इस तरह किया है दैट आई मेड श्योर दैट आई टीच माई सन व्हाट नॉट टू डू इंस्टेड ऑफ टीचिंग माई नीस हु ग्रो अप इन द सेम हाउस. हम मेरी बहन की बेटी, वो मेरे बेटे से बड़ी थी, उसको हम बताएं. आई मीन आई विल, अगर मैं तैमूर की बात करूं या ABC किसी भी मेल की जो मेरी जिंदगी में है, आई वुड मेक श्योर कि वो चीज ना करें जो कि जिनके लिए लड़कियों को मना किया जाता है. बिकॉज अगर मर्द ठीक हो जाए ना, मेल्स ठीक हो जाए, तो औरतों के मसले. सो आई गेस अपने प्लेटफॉर्म से आई ऑलवेज मेड श्योर दैट आई टॉक अबाउट वेमेन विदाउट टर्निंग देम इनटू विक्टिम्स, कि उनको उनकी आवाज सुनी जाए. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. उनको उनको उनकी बात को क्या कहना चाहिए, उनकी बात को श्राव्य कर सके, कि उनको उनको उनकी आवाज सुने, उनकी बात सुने, उनकी बात को इम्पोर्टेंस दें. क्योंकि अब जाके आई हैव नोटिस्ड, आई डोंट वॉच टीवी, पर जो मुझे ट्विटर से पता चलता है दैट नाउ पाकिस्तानीज हैव स्टार्टेड टू मेक डिफरेंट एड्स. अब वो ये नहीं दिखाते कि औरतें बैठी हुई, बंदे बैठे हैं और औरतें उनके लिए खाना बना के ला रही हैं. नो, तो सो एज आई सेड कि वही चीजें मैंने अपनी राइटिंग में, वही चीज किसी चीज से भी उतना फर्क नहीं पड़ता जितना आपकी पर्सनल जिंदगी से फर्क पड़ता है कि आप उसमें क्या प्रैक्टिस करते हो. अच्छा मेहर, so I understand that you were a former executive editor, right? Of Daily Times, Of yes. Daily Times, yes. So can you share your insights about how gender portrayal in media, or anything about that? No, you see, everything is undergoing a change, especially in Pakistan. दुनिया में तो पहले अवेयरनेस आ गई थी. सो मेरा, क्योंकि जब मैंने पहले डेली टाइम्स में काम किया एज एन ऑपरेट एडिटर, सो हम लोगों की राइटिंग को एडिट करते हैं. सो वी बिकेम वेरी कॉन्शियस के वर्ड्स क्या यूज करना है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समबडी, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट somebody who's been raped, so you have to be careful कि अब उस विक्टिम वर्ड है या सर्वाइवर वर्ड है. जैसे हमारे जमाने में, हमारे बचपन में, फिल्मों में, टीवी में, मीडिया में वर्ड इस्तेमाल होता था, उसकी इज्जत लुट गई. जस्ट इमेजिन कि वुमन इज रेप्ड, तो उसकी इज्जत लुट गई, उसकी इज्जत नहीं लुटी. एवरीथिंग, यू नो, द वे पीपल बॉडी शेमिंग, उसके बाद उनके कैरेक्टर के बारे में, द वे पीपल टॉक्ड अबाउट वुमेन, हाउ दे वर, हाउ all these things change. Yes, आपके पर्सनल जिंदगी से, when you start seeing them in media, when you start, जब आप अखबारों में, मैगजीन्स में, टीवी पे, सिनेमा में, when you start looking at the terms that are being used. I think, I assume all of you were born in early 2000s. So if you look at the movies that were made then, let's just go to India, because Pakistan doesn't have a very robust cinema, unfortunately. So you will see a huge change, the way they portrayed women then and the way women are portrayed now. So obviously everything changes when you start to write about it. क्या वर्ड्स क्या इस्तेमाल कर रहे हो किसी के लिए. तो जैसे फॉर इंस्टेंस, उसके बाद वही चीजें पुलिस स्टेशन में जब एक औरत कंप्लेंट करने के लिए जाती है, तो उसको उसके साथ बिहेव कैसे करते हैं, उसको ट्रीट कर. एंड दैट्स नॉट जस्ट बाय द वे लिमिटेड टू पाकिस्तान, ये इट्स अ यूनिवर्सल इशू. आप अपनी पुलिस कंप्लेंट लेके अमेरिका में किसी जगह पे जाओगी, तो वो कुछ अरसे के देर के बाद वो आपको छूटा करके और करके, ये डॉक्यूमेंट्री, इस वक्त डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे राइट नाउ. अगेन फॉरगॉटन द नेम, बट दिस डॉक्यूमेंट्री दैट विमेन, फीमेल विक्टिम्स, वो कोई उन्होंने डेकेड लॉन्ग उन्होंने पूरा चेक किया, एंड दे फाउंड आउट दैट दे वर नॉट बिलीव्ड. And police officers they made them believe कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, यहाँ से बस चले जाओ यहाँ से. I feel like it already requires so much courage from these women to stand up and voice out what they've been through, and then being shut down like this. That's the most important thing. Look, in personal life, people are still saying strange things about one another. They are still using bad language. औरतों के लिए, क्योंकि ये जो सारा कल्चर, हर चीज जो enable होती है ना, वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्कल सोसाइटीज में निकलती मर्दों की वजह से, बट इनेबल और परपेचुएट करने में औरतों का बहुत ज्यादा हाथ होता है. हाउ अ वुमन, आई ऑलवेज बीन वेरी कॉन्शियस इन माई राइटिंग, इन माई सोशल मीडिया इंटरेक्शंस, कि एक औरत के तौर पे मैं किसी और औरत के बारे में बात कैसे करूंगी, उसके साथ मैं बात कैसे करूंगी, उसके बारे में बात कैसे करूंगी, उसको एड्रेस कैसे. यू वुड नॉट बिलीव इट, द नंबर ऑफ पीपल आई हैव लाइक डीएम्ड
people who were following me so I could DM them on Twitter. They would say something strange. I said, I'm a PTI supporter. तो वो के अगर वो किसी के बारे में तो I unfollowed people because they were using bad language about Mariam or Benazir Bhutto or Sharmila Faruqi or Bakhtavar, कोई अगर उनकी शक्ल के बारे में उनके कैरेक्टर के बारे में so I have seen these changes. People have become very careful. They are called out on the terms that they use. तो ये इसका सारा का सारा कहीं ना कहीं उन writers का, उन editors का, उनका वो जो लिखने वाले थे, जो edit करने वाले थे, उन चीजों को उनको बहुत ज्यादा credit जाता है. Because these things will not be acceptable anymore. आप 25 साल पहले क्या लिख रहे थे और 2024 में क्या लिख रहे हो, there's a world of difference. You could so as that's what I could do as a writer, and that's what I did. I always focused on women's stories. I've written a lot about women rape victims, child rape victims, domestic violence. उसके बाद कुछ भी, you read about a murder in Aptabad, a 16-year-old girl getting killed. In my book, there's a chapter on a girl who was killed in Aptabad, and then a body was put in a van and burnt. So हम यही कर सकते हैं as writers, as an editor, as a talk show host, कि हमारी language क्या है, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि हमारी generation और आपकी generation, हम लोग we are from two different planets. No, I think the platform you have, in a way also, it is beautiful, yet it can be very dangerous. And it plays a huge role in who is handling what. And I feel like you have probably done that beautifully. You don't understand. I'm one of those people who have been so badly trolled on social media. People from India trolled me, PTI people trolled me, PMLN. But you see, that's the important thing. If my son, for instance, my son has taught me not to be judgmental about people. He's 24 now, but if my daughter, I don't have a daughter, but if anybody I know posts something और वो मुझे लगता है कि ये गलत है, तो I will make sure कि मैं उनको कहूँ कि ये हटा दें. For some reason, शुक्र है लोग सुन लेते हैं बात, because they know that I'm coming from a place and I mean them well. So that's all we can do. हम लोग बातों से ये जो फेमिनिज्म की हम बात करते हैं, फेमिनिज्म हैज चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर. फेमिनिज्म में कुछ भी बुरा नहीं है. लोग सिर्फ ये समझते हैं कि आप कह रहे हो कि मेरी मर्जी, जब आप कह रहे हो मेरी, इफ यू से माय बॉडी माय चॉइस, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी सोसाइटी में रह के कि मैंने वो हरकतें करनी है जो मेरे रिलीजन के खिलाफ हैं या जो मेरे कल्चर के खिलाफ हैं, जो मेरी फैमिली के खिलाफ है. इसका मतलब सिर्फ ये है कि मेरी मर्जी के बगैर शादी मत करो. Don't force me to have 6 children. Hashtag has been used. Don't force me to have 6 children. Don't question my right to work. आपके इर्द गिर्द कितनी फीमेल्स होंगी आपकी एज की, आपसे थोड़ी सी बड़ी, 20s में, अर्ली 30s में, दे हैव फैबुलस डिग्रीज एंड दे डोंट वर्क शादी के बाद. क्योंकि कुछ अभी तक औरतों के दिमाग में पाकिस्तान में ये बिठाया गया कि तालीम हासिल करो, बट योर मेन पर्पस इज टू गेट मैरिड. जो 1800s और 1900s में गोरों के मुल्कों में होता था ना, वो हम आज के दिन तक उसी चीज के पीछे पड़े हुए. सो ऑल वी कैन डू इज के जो प्रैक्टिस करते हैं उसको प्रीच भी करें किसी तरह भी. When आप लोग, just my last word, when you people are talking about one another, just be careful कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो. That's also feminism. Exactly. And as I said कि rights का feminism in a nutshell is just कि आपके पास ये लिबर्टी हो कि आपको ये पता हो कि मुझे भी यही राइट्स मिलेंगे जो मेरे भाई को मिलेंगे. It's as simple as that. कि मेरे और एक लड़की और लड़के के राइट्स एक जैसे हैं फॉर एजुकेशन, और बेसिकली एजुकेशन का ही मोस्टली होता है पाकिस्तान में. एंड दैट्स we can talk about this topic forever. Yeah, we can. Exactly. But thank you so much for giving us the honor of talking to you, and it's been a pleasure having you on this. No, thank you so much for letting me talk about something I'm very passionate about. Well, as I said, as my son says, every day
is a Women's Day. Yeah. He said it when he was 13 years old. He said, you don't need an International Women's Day to celebrate women. You should be celebrating women every day. Right. So that's my advice to all you young people. Yes. Thank Be you good so to one much, another. guys. That was it for today. Bye. Thank you.